Sir, my sister, she is completely same, but उसके जो हस्बैंड का रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। हम्म। मैरिज लाइफ या मैरिज के बाद कुछ अच्छा उसके साथ नहीं हुआ। वो डॉक्टर है, उसने ओके। शादी के बाद इवन डॉक्टरी भी छोड़ दी। हम्म। और उसके 10-12 साल बाद जब रिलेशनशिप में मतलब अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, अलग हो गए, तो हम्म। उसके बाद वो उसका वो उसने दोबारा डॉक्टरी शुरू की। तो हम्म। उसका इतना नाम है अब कि मतलब बहुत ज्यादा नाम है। अपनी कार खुद ड्राइव करती है, अपना घर खुद बनाया, सब कुछ उसने खुद किया। रिलेशनशिप नहीं, बिल्कुल बेकार। मतलब बाकी पहला सब जो कुछ था सेम। उसका जो शादी था। सर मेरे भी एक नोन है, क्रेडिट हम्म। मैनेजर है। बहुत बड़ा पोस्ट है लेडी का। केतु लग्न में है, असेंडेंट लियो है। एंड सन जुपिटर सर 9th हाउस में है माँ, और वीनस 11th हाउस में है। तो 11th हाउस। उसका ऐसा है कि हाँ सर, शादी के बाद में बहुत सारे बाउंड्रीज हम्म। उसके ससुराल वालों की तरफ से, इवन उसके हस्बैंड की तरफ से। हम्म। तो उसने पूरी तरह अपने आप को जॉब में ज्यादा किया, और काफी फोकस सक्सेस किया। है। कम एज में बहुत बड़ा पोस्ट है उसका। और अभी उसका यही है कि मैं अपने लिए पैसा जमा करूं, ठीक है ना। अपने लिए मतलब ऐसा स्टेटस करूं कि कोई मुझे नीचा ना दिखा पाए। और हम्म। ऑलमोस्ट 2-3 BHK में रहते हैं दिल्ली में, और सेपरेट सेपरेट रहते हैं। तो A Leo ascendant person is a king. They love themselves. Okay? वो अपने आप को प्यार करते, किसी और को कभी प्यार नहीं कर पाते, चाहे वो कितना भी वो बोले। They love someone, their partner, their spouse, or anyone else, but they actually love themselves. They are the director, they are the boss, but full of ego, okay, at times, and behave a little proudly. They think that they know everything, they are doing the best thing in the world, and they also never bow down in front of anyone. Also, इनको पूरा attention चाहिए होता है. They want full attention, okay, from everyone, whatever they may do. चाहे वो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, they feel that everyone is seeing me and I need to perform well. I need to create an image in front of everyone so that they, they give that respect every time. They guide and help their own siblings. Actually, what I have seen practically, Leo ascendant person has some karma towards their siblings. Like most of the cases, if there are 4, 5 siblings, or even 2, 3 siblings, the Leo ascendant person is taking care of everyone, is guiding them everyone, and even supporting them financially, emotionally, physically, every possible way. In return, they may not get anything from their sibling, but they are always doing for them. Become the boss in the family, and that's why I've written that. Try to achieve such position or image wise and financially in life where no one could dare to mess with them. मतलब कि ये लोग अपने आप को पैसे के रूप में हो, या अपना एक इमेज या रेस्पेक्ट या पोजीशन या स्टेटस एक ऐसा गेन कर लेते हैं धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में, एक हाव भाव बना लेते हैं अपने लाइफ में कि मुझसे कोई लड़ाई झगड़े करने ना आ सके, या मेरे ऊपर कोई बोल ना सके, ना फैमिली वाले ना बाहर के लोग. They can do anything to satisfy their ego at times. Always fear from defamation or loss of image in society. इनको डर लगता है कि कोई इनको बदनाम ना कर दे लाइफ, चाहे वो किसी भी बात को लेकर के हो, किसी भी छोटी से छोटी बात को लेकर भी. तो हमेशा इनके बैक ऑफ द माइंड में वो चलते रहता है कि मुझे कोई मान सम्मान हानि नहीं करना है. So you will find out Leo ascendant people, like even lot of people are there, like वो लोग अपने आप को अपने like सोशल मीडिया पे हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, अपने आप को ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने परिवार को नहीं.
You will find out Leo ascendant person, they are always giving out some of the other knowledge or gyan to people in the form of like uh, short stories, or you will find out short quotes. They are always sharing all those things in their social media, WhatsApp group, or anything. But they will not or never share their personal life story. Nothing related to their personal life or even their business life, professional life. Because somewhere they feel that if I share something to anyone, nazar lag jayegi, means something negative could happen if they share something about their personal life. They never accept anything wrong done by others intentionally or unintentionally, nor accept defeat or insultation. Most of the time, they ignore any kind of physical fight or quarrels, but verbally, they can be very hard. Like what I have find out, most of the people that they will not uh, speak directly to their enemies or say anything bad on the face of their enemies, but they will talk about them. But they will talk to themselves only in a closed room. I want to hit that person. I want to break his leg and arms and everything. Yes. लेकिन कभी सामने जाकर के से लड़ाई नहीं कर सकते हैं या कुछ उनका बिगाड़ नहीं, बट बड़ी बड़ी बातें ये जरूर बोलेंगे अपने आप से। और जो भी अपने अंडर में वैसे लोग रहते हैं, परिवार के लोग, जिनको पता है कि ये शेर मतलब लायन, अगर ये दहाड़ है, अगर ये गुस्सा है, तो मतलब शांति से रहो सब, बस सुन लो क्या बोल रहे हैं, इनको जवाब नहीं देना किसी तरीके से। नो वन शुड रिप्लाई टू दिस पर्सन whatever he is telling. They are blessed with servants. You will find out Leo ascendant person, they will have servants like in the home, even in their office too, if required. Especially a cook. Okay, they can't bear hunger. Even hire a cook in the office too if required. और ये अगर अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा इनकम है ना, तो इनको उसमें खर्च करने में इनको सोचना नहीं पड़ता है। दे फील दैट फूड, खाना पीना, ये जो चीजें है ना, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि लियो एसेंडेंट पर्सन को लगता है कि अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे अच्छा खाना। ओके, एंड फॉर दैट दे कैन डू एनीथिंग। दे ड्राइव देयर ओन कार, इवन एट टाइम्स दे कांट ट्रस्ट द ड्राइवर्स। एंड उनको कई बार समय का बहुत ज्यादा ख्याल रखता, लाइक दे आर ऑलवेज बिफोर टाइम एट टाइम, कि समय के पहले कहीं भी पहुंच जाना है, काम शुरुआत कर देनी है, बाकी सब अपने टाइम से है, इनको पहले पहुंचना है। दे वांट टू रीच दैट डेस्टिनेशन बिफोर टाइम, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, because sun is ruling their ascendant, their first house, and sun is time, and they are always on time, before sun. And why I've written this, they can't trust drivers, or especially they don't give their own vehicle to anyone else. They feel that कि मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं सहना। Whatever they own, a Leo ascendant person, whatever they own by themselves, a house, a car, a property or jewelry or assets, whatever, they feel that it's mine. It's mine. No one can should use it or waste it any way. I can't bear any loss. Okay. Like to go for a long ride with their partners and enjoy. कभी कभी ऐसे ही मन किया, गाड़ी निकाले वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ निकल गए घूमने के, खाने के लिए particularly. You will find out a lot of people who are at present doing a lot of food bloggers or food blogging. You will find out they are either Taurus ascendant, Leo ascendant, or Libra ascendant. They love food. उनको खाना खाना. Whenever they plan for a vacation, two things they look for
good food and luxury stay. वेकेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक लीव असेंडेंट पर्सन के लिए, क्योंकि ये जब काम कर रहे होते हैं ना तो इनके पास एक सेकंड भी टाइम नहीं है वेस्ट करने या किसी और चीज पे दिमाग लगाने। लेकिन जब दिन भर काम कर लेते हैं ना, या फिर कुछ समय लगभग 1 महीना 2 महीना पूरा काम कर लिए, उसके बाद इनको आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए, कहीं घूमने जाना है। And they will make sure that wherever they are going for a vacation, they should get good food to eat, tasty, yummy foods, and luxurious stay. कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। And even to get that kind of service, they even pay extra tip when they are actually satisfied with their services. You will find out lot of Leo ascendant people, इनको टिप्स देना ना अच्छा लगता है। कोई भी घर के अंदर, घर में काम करने वाले सर्वेंट्स हो या ऑफिस में एम्प्लॉइज हो, कई बार इनको निग्लेक्ट कर देते हैं इन लोगों को, लेकिन बाहर अगर होटल जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, या कहीं रोड किनारे कोई भी कुछ भी खाने के लिए जा रहे हैं ना, तो उनको एक्स्ट्रा दे देते हैं। 10 रुपए का सामान खाया तो 10 रुपए और एक्स्ट्रा उसको दे दिया, अच्छा बनाया तो। और ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये जब भी उस इंसान के पास जाएं, वो रेडी रहे कि पहले इस इंसान को देना, इसको खिलाना, इसको ये सर्विस देनी। तो वांट एवरीवन टू बी एट देयर सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। इनको ऐसा लगता है ना, मैं जो चाह रहा हूँ वो तुरंत वो हासिल हो जाए, मेरे पास आए। They are born with fire inside to become the king one day. Master only one thing after a point of time. That is any business or where they can rule. Okay. Because they face a lot of obstacles in whatever career path they choose, especially can't do hectic job. Like what I have find out people like having a Leo ascendant person, they can't do job. They can't survive for a long time in a hectic job. इनको अगर कोई काम पसंद नहीं या किसी का कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा नहीं है, कोई बिजनेस का, कोई कंपनी का, तो सेम डे उसी दिन या अगले दिन वो जॉब जाना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस या अगर कुछ लगता है ना गलत हो रहा है लोगों के साथ, या गलत यूटिलाइजेशन हो रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो लोग छोड़ देते हैं। सही काम करना है, सही पैसा कमाना। बिकॉज फिर से बात आ जाती है ना इमेज पे, कि लोग मुझे पूछेंगे। और जैसे मैंने पहला जो लाइन में लिखा था, दे लव देमसेल्फ, कि अगर खुद को नफरत करने लग गए ना कि मैंने ये गलती की, मुझसे ये गलती हो गया, तो वो कभी जिंदगी भर वो कोसते रहेंगे खुद को। इट्स बेटर टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन इवन इफ देर इज नो पाथ इन फ्रंट यू, जस्ट लीव। And that's why I've written, if anything is wrong anywhere, they will leave the job on the same day. Have a lot of patience to learn through their own research and thoughts. God always guides them in good and bad times both. ये लोग काफी लकी होते हैं एक्चुअली, लियो असेंडेंट। इनको जब जरूरत होती है ना कहीं से कुछ ना कुछ मदद मिल जाती। ब्लेस्ड विथ लक्ष्मी as a spouse or partner, because you see a Leo ascendant person, the 7th house is Aquarius sign. And who is Aquarius sign? Your spouse, your partner. And actually, a Leo ascendant person see a major transformation in their life and career after getting married. Okay. Feel very insecure to make any decision for self and family, like even buying a house, a car, etc. Have to take permission or suggestions from partner or anyone else. Like they are the king, but still they feel very insecure कि मुझे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए घर लेना है, गाड़ी लेना है, लेकिन मैं लूं या ना लूं। क्यों? क्योंकि there is a Scorpio sign in the 4th house, and wherever there is Scorpio sign in your chart,
You will always have that unknown fear inside you, whether that will be good or not, bad or not, whether I should take that decision or not. तो इसलिए उनको कहीं ना किसी से गाइडेंस की जरूरत होती है, और वो गाइडेंस कौन प्रोवाइड कर सकता है? दैट गाइडेंस विल कम फ्रॉम स्कॉर्पियो साइन ओनली. एंड हु इज स्कॉर्पियो साइन? Either your spouse voice, either someone who is spiritual or a guru or a guide. You will have to take some of the other guidance from. So actually you can use this technique in every chart. Wherever a Scorpio sign is there in your chart, you need someone to give you that guidance, suggestions, or permission that yes, do this. Either your spouse or someone else or a guru. Because actually you will find out most of the time your spouse always, maximum of the time, they are correct. Okay. And that is applicable, and this technique is only applicable if you are religiously or ritual wise you are married to someone, not if you are in live in relationship or something else, or in relationship. Because ritual marriage means you are activating seventh house, then it's getting activated the eighth house is the life after marriage. And even in Westerns, there is a registered marriage. Even in India, there is a registered marriage happening. People are somewhere not willing to get into all this ritual and all these things. They are having less time and money to expend in all these things. So even that is also applicable. If you are married and you are registered in front of government, then also this is applicable, this technique. So moving ahead, most of the time they follow their partner's suggestions, especially their father's guidance. Parents, sorry. Let me correct this thing. Most of the time they follow their parents' suggestion, especially their father's guidance in education and career board. And they try to become the ideal son or daughter of their parents. Because in future, hello, Sir, can I ask a question, sir, please? yeah, yes, So, sir, you just now talked about, they are very insecure, or rather, not very sure of buying a car or a house because of Scorpio sign being in the fourth house. So, I could not understand the connection of how, the suggestion from their partner, how is it linked? Because their fourth house is 10th house of the partner. How is it actually it's linking? actually the speech or the second house of your spouse. Since Libra sign is your spouse, your partner, Right. and Scorpio sign is the So, space or speech. right. That's why. Okay, from the okay, native, as in like Kalpurush Kundli, you are Yeah, saying. yeah. Yeah, Okay. right, sir. So actually, they try to become the ideal son or daughter of their parents. Okay. Especially this happens while they are growing up, while they are doing their graduation up till that time period. They become that ideal child of their parents. They listen to them, their parents every time. Because in future they become the most reliable person who can take the responsibility of the extended family and even take better decision for everyone. And that's what they master. Actually, they are the master in taking decision or taking care of the family responsibilities, everything. They will manage their home and they will manage their business or work smoothly. And you will find out Leo ascendant people, they manage everything on themselves, by themselves. Because that example that I shared to you, they don't even give their own car to drive to anyone else. Because they feel that it's my work, it's my duty to do everything by myself. Whatever they feel that it's anyone can do, they will hire a person.
Okay, especially you will say in businesses and industries, like people who are the boss or I will say the owner of the business, they hire people, only those people who are doing any kind of physical activities, not mental activities or mental uh, work. These Leo ascendant people, they are master in doing any kind of mental work. They can take any level of pressure in their mind, in their brain. But they are very weak, or I would say very lazy doing any physical activity. But somewhere they need to balance this thing because that's where Saturn become the killer for them, the sixth lord and the seventh. So if they doesn't take care of their health, their diet, their stomach, their intestine, the liver, if this doesn't work out every day, ultimately they will fall ill. And for a long time they have to suffer. And especially after the age of 61, what I have seen, like they struggle with their health gradually. So business they can do into they can be into management, they can be a director of a company, CEO, a financial advisor or manager. They are very good at marketing or dealing with people, sales and marketing. They can start their own industry, manufacturing or supply chain, or even they can get into government job, high paying government position. Saturn, the sixth lord, okay, indicates the karma to serve else suffer. Means a Leo ascendant, a king is bound to serve the society, serve everyone. And if they doesn't, ultimately they suffer. Suffer physically, mentally, emotionally, any way. Because one technique that I shared in the first class, moon in 12th house or Cancer sign in 12th house, that they were very emotional in their past life. Now, in this life, a person is Leo ascendant. It means that somewhere emotionally or mentally they were weak in their last life. And in this life, a Leo ascendant person will never show off or never share their emotional trouble, trauma, suffering to anyone. They will try to hide it. 12th house. And that's why I've written in the below section that depression is always there in these people. Somewhere they are depressed from inside. They can even think of that ending their life. They can take that step, self or with the family. Because one incident that I will share to you all that uh, a person whom I know who was a Leo ascended person, his business, uh, he was in lot of loss. Okay, he was in lot of debts also. So it took that decision to end his life, but not only his life, he ended everyone's life, his own. So that kind of situation, you see a lot of people who take such kind of decision. It's because somewhere they are depressed from inside. They cannot manage because they are Leo ascendant person. They cannot ask favor from anyone. If they can do, they will do by themselves. अपने आप से ही मेहनत करके अपने आप को उस परिस्थिति से निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन जब वो नहीं हो पाता दे ट्राई अ लॉट एक्चुअली जब वो एकदम बिल्कुल नहीं हो पाता जब बिल्कुल लाइफ या भगवान एकदम रास्ता बंद कर देते हैं तब वो इस तरीके के डिसीजन लेने की सोचते हैं और कई बार डिसीजन ले भी और इस चीज को रोकना है जब भी आपके लाइफ में या ऐसा कोई भी इंसान है ये ट्राई टू हेल्प देम आउट गाइड देम और टू समवेयर psychologically help them to overcome the situation. Okay. So that person was thinking of all this thing. Somewhere he's still struggling from his business and all, but he tried to take that step. Like, okay.
So now coming to the point, like Saturn is the sixth lord, and also Saturn is the lord of the seventh house. And spouse brings huge success with lot of boundaries. This is a very important line. Spouse brings huge success for a Leo ascendant person, but there is a condition with lot of boundaries. Lakshman Rekha मीन्स जो पार्टनर आते हैं इनके जीवन में, उसके वजह से इन लोगों का लाइफ बहुत आगे बढ़ता है, बहुत सक्सेसफुल होते हैं फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग। बट क्योंकि सैटर्न रूल कर रहा है सेवेंथ हाउस को, और सैटर्न का मतलब ही है बाउंड्रीज क्रिएट। सैटर्न का मतलब ही है कि कुछ गलत नहीं करने देना, कुछ भी गलत स्टेप नहीं लेना। तो इसीलिए कई बार जब ये टूट बिखर जाते हैं ना, तो इनके वाइफ, इनके पार्टनर ही आते हैं इनके सामने कि आप ये स्टेप मत लो, ये गलत, ये सही नहीं है, रुक जाओ। That's why for a Leo ascendant person, Saturn becomes the killer in the form of long-term disease, litigation, suffering, or even spouse. Because कई बार कुछ कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं Leo ascendant people, like as I told even in many classes, that a Leo ascendant people, because he's a king, can have multiple wives, multiple relationships, even outside marriage. But that actually doesn't help them out. कितना भी शादी कर लेना, कितना भी रिलेशनशिप में चले जाएं, अपने वाइफ को छोड़ दें, वाइफ को दुख दें, तकलीफ दें, तो उससे इनको प्रॉब्लम होना है, वो परेशानी आनी है लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो डिजीज के फॉर्म में, लॉस के फॉर्म में, लिटिगेशंस के फॉर्म में, वो वापस आते। एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स बाउंड्रीज आर गुड फॉर एवरीवन। और यही चीज समझ में नहीं आता है कई बार, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न तो है ही, राहु भी है, और राहु कई बार भ्रमित करता है। राहु, which is also the seventh lord, try to divert a Leo ascendant person that can have multiple wives or relationships, or multiple businesses, or multiple career paths. So whenever a Leo ascendant person tries to do multiple works or business or marriage, somewhere they start struggling. Earning starts from the age of 19, and growth, they actually rise very well. And whatever good ages that I have mentioned here, these are the best ages for a Leo ascendant person. Every time you will check that, you will find out that these ages help these Leo ascendant persons to grow gradually. Then, as I have written, that depression and even suicidal thoughts are very common for them. Keep the secret with themselves. Like even failure in love or business, activate the situation. Because again, seventh house. You see, seventh house the killer, and seventh lord is Saturn, and seventh lord is also Rahu. So Rahu is illusion. When they fail in relationship, in marriage, in business, they feel like I don't have anything. I'm directionless now. I need to end my life. So especially the years, the ages that I have mentioned, 19, 31, 43, 55, 67. These are the years or ages for a Leo ascendant person. They go through such situation. And whenever you find out these ages, you should warn them, you should guide them properly, motivate them properly, that it's not the end of life. Huge success after marriage, as I have written down again, and also mentioned the good and the bad ages. Okay. So this was Leo ascendant person. You can research a lot on all this and even share your points. So, how is actually moon for Leo ascendant? We have in Malefic, Benefic, and Killer Planets, we haven't talked about moon, wherein you just now talked about moon. The past life, they were weak emotionally. So, Yeah, isn't it malefic in a way? it's a malefic, not malefic, it's a negative, I would say. Okay. It's a negative energy for a Leo ascendant person. Because if a Leo ascendant people
who doesn't want to show his emotions to anyone, it means that Moon is not in a supportive position. Even you will find out, like this is very common because Leo ascendant, fourth house, which is the house of mother, which is the house of Cancer sign, natural Kal Purush Kundli, there is Scorpio sign. And what it means that there is lot of karma, pending karma towards their own family. He needs to support them, but in return he will not get anything from them. Even in 12th house, there is Cancer sign, again the family. They will do for the family but not get anything from the family. Again, the Virgo sign is in second house. Second house again represents their own personal family. Again, they will be serving their family but not get anything in return from their own family. So Leo ascendant person, somewhere they feel that I can't share my emotions to anyone. There is no one who can listen to. And that's why when they lose something very big in their life, they try to take that risk of living it. Sir, my sister, she is completely same, but उसके जो हस्बैंड का रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। Hmm. मैरिज लाइफ या मैरिज के बाद कुछ अच्छा उसके साथ नहीं हुआ। वो डॉक्टर है, उसने शादी के बाद इवन डॉक्टरी भी छोड़ दी Hmm. और उसके 10-12 साल बाद जब रिलेशनशिप में मतलब अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, अलग हो गए, तो उसके बाद वो उसने दोबारा डॉक्टरी शुरू की, तो उसका इतना नाम है अब कि मतलब बहुत ज्यादा नाम है। अपनी कार खुद ड्राइव करती है, अपना घर खुद बनाया, सब कुछ उसने खुद किया। रिलेशनशिप नहीं, बिल्कुल बेकार। मतलब बाकी पहला सब कुछ सेम। का जो शादी था हाँ जी। और उसके बाद उन्होंने शादी किया फिर से नहीं, कोई शादी शादी नहीं नहीं, डाइवोर्स भी नहीं हुआ उनका। डिवोर्स भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी, मतलब उनके लिए कर्स है, वही बाउंड्रीज, वही प्रॉब्लम, दुख तकलीफ हाँ जी, पार्टनरशिप का है। हाँ जी। लेकिन और भी कुछ कॉम्बिनेशन जरूर होंगे उनके चार्ट में जिसके वजह से मे बी। tension है। तो सन वेनस जी। केतु का कोई कॉम्बिनेशन है उनके चार्ट में? एक सेकंड सर। सर सन केतु है सन के 12th हाउस में, 12th हाउस में। और वेनस वीनस 11th में है, अकेला। अकेला है, कंबस्ट है, कंबस्ट है। कम दस का। तो सन वेनस केतु, क्योंकि जो हाँ जी, आपने स्टोरी बताया ना कि आज तक डिवोर्स नहीं हुआ है, वो तभी हाँ पॉसिबल है जी। जब सन वेनस केतु का कनेक्शन है। तो वीनस तो सर उसमें 11th में, फिर भी वो तो भी कंबस्ट हो मतलब। जा रहा है नियरेस्ट टू हाँ सन जी, के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे डिग्री वाइज भी देखते हैं तो वो चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी मतलब ये टेक्निक है एक्चुअली। जिनका हाँ जी, डिवोर्स 20 25 30 साल चलता है ना केस, या हाँ जी, फिर कभी डिवोर्स होता ही नहीं है, हाँ जी, लीगली आप सेपरेट नहीं होते, तो उन ठीक है। चार्ट्स में आप देखेंगे सन वेनस केतु का कॉम्बिनेशन। सर मेरे भी एक नोन है, क्रेडिट मैनेजर है, बहुत बड़ा पोस्ट है लेडी का। केतु लग्न में है, एसेंडेंट लियो है। एंड सन जुपिटर सर 9th हाउस में है माँ, और वीनस 11th हाउस में है। तो उसका ऐसा है कि हाँ सर, शादी के बाद में बहुत सारे बाउंड्रीज उसके ससुराल वालों की तरफ से, इवन उसके हस्बैंड की तरफ से। तो उसने पूरी तरह अपने आप को जॉब में ज्यादा किया और काफी सक्सेस है। कम एज में बहुत बड़ा पोस्ट है उसका। और अभी उसका यही है कि मैं अपने लिए पैसा जमा करूं, ठीक है ना, अपने लिए मतलब ऐसा स्टेटस करूं कि कोई मुझे नीचा ना दिखा पाए। और ऑलमोस्ट 2-3 BHK में रहते हैं दिल्ली में, और सेपरेट सेपरेट रहते हैं। तो ये सर वर्क करता। और हाँ, सुसाइडल थॉट्स टेंडेंसीज काफी आए थे बीच में, काफी उसका ये हुआ था डिप्रेशन। तो मैंने कहा भैया तुम दिल्ली में रहते हो तो वहाँ काउंसलिंग करा लो। तो उसने काउंसलिंग भी सर कराया था।